बड़ी उम्र के लोगों को आज तक ये समझ नहीं आई व्हाट इज सिचुएशनशिप, बिकॉज जब तक हम थोड़े से जवान थे तब तक ये पता चलता था कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड। मजा बहुत आ रहा है, मजा बहुत आ रहा है कि आगे मतलब लेट्स जस्ट ट्राई टू फर्दर टीज आउट कि व्हाट इज कॉम्प्लिकेशन है कि हो नहीं पा रहा, व्हाई। आई थिंक ये लोगों से पूछना चाहिए जो सिचुएशनशिप्स में पढ़ चुके हैं, अगर उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे किए, एग्जिट कैसे करना है, एग्जिट स्ट्रैटेजी के बगैर जब लोग एक दूसरे के साथ, अच्छा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, नहीं होती उसकी कोई। आप बस एक ट्रेन की पटरी पे चलते हो और आप फिर लाइक एक बुलेट ट्रेन की तरह आगे प्रोसीड करते हो। कोई दोस्ती, यारी, कोई दुश्मनी, फैमिली रिलेशनशिप, एनीथिंग, it's no strings attached if I would that's mostly for one night. Hello everyone, this is Shiza with Cocktail. Cocktail मतलब कि interesting flavors, interesting बातें, वो बातें जो आप सुनना चाहते हैं। So today I have a special guest with me, Amna. Amna मुझसे कोई 10 साल छोटी है और आमना को बुलाने का मकसद ये है कि हम जान सकें कि यूथ क्या सोचती है डिफरेंट इश्यूज के बारे में, यूथ के क्या प्रॉब्लम्स है और यूथ हमारी है क्या एक्चुअली। सो अंडरस्टैंड करने के लिए यूथ के प्रॉब्लम्स एंड हु यू एक्चुअली टू डिफाइन यूथ, वी हैव young guests here. So आमना को वेलकम करते हैं और साथ ही साथ आमना से पूछते हैं how is she getting on? I thought you and I were the same age. What are you saying? ये तो आमना की अच्छी बात है कि उसको ऐसा लगता है, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। So लेकिन ये है कि आमना, so let's talk about the different youth के जो problems होते हैं. Let's just move on to the topic that itself. आज हम लोग ये बात करना चाहते हैं what is situationship. एक बहुत ज़्यादा buzzword है, everybody talks about it. लेकिन मेरे जैसे थोड़े से बड़ी उम्र के लोगों को आज तक ये समझ नहीं आई व्हाट इज सिचुएशनशिप, बिकॉज जब तक हम थोड़े से जवान थे तब तक ये पता चलता था कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड का एक टर्म चला करता था। व्हाट इज सिचुएशनशिप दैट गोज ऑन, यू नो, आई मीन अ सिचुएशनशिप, पीपल टेल मी व्हाट डू दे मीन। तो बेसिकली अगर आप लोगों की डेफिनेशन को देखें तो आपसे बड़ों की डेफिनेशन ये थी कि अच्छा चलो ठीक है, मतलब ये जो है ना कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको जो है ना हमने सोचा कि एक नया रूप देते हैं सिचुएशनशिप का, एक रिलेशनशिप जो बिल्कुल काम कर नहीं रही और शायद काम कर भी नहीं सकती। मतलब मजा बहुत आ रहा है, मजा बहुत आ रहा है कि आगे मतलब लेट्स जस्ट ट्राई टू फर्दर टीज आउट कि व्हाट इज सिचुएशनशिप। ये जो भी है, सो सिचुएशनशिप इज नॉट, सिचुएशनशिप डज नॉट मीन यू आर इन अ रिलेशनशिप. It means, what does it mean? What is it? It means that you want to be in a relationship, मगर हो नहीं पा सकता. ऐसा क्या कॉम्प्लिकेशन है कि हो नहीं पा रहा? Why? I think ये लोगों से पूछना चाहिए जो सिचुएशनशिप्स में पढ़ चुके हैं, अगर उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे उधर एंटर कैसे किए, एग्जिट कैसे करना है, एग्जिट स्ट्रैटेजी के बगैर जब लोग एक दूसरे के साथ। अच्छा, correct me if I'm wrong. When we say friends with benefits, so do we mean situationship? That's actually a very tough question. और ये काफी मुश्किल सवाल है ऑनेस्टली। मुझे लगता है कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स इज लाइक आपकी फ्रेंडशिप शायद एक हद तक मेंटेनेंस क्वालिटी होल्ड करती है उसके अंदर, मगर सिचुएशनशिप जो है ना वो बगैर किसी नियत बैक एंड इंटेंशन नहीं होती उसकी कोई। आप बस एक ट्रेन की पटरी पे चलते हो और आप फिर लाइक एक बुलेट ट्रेन की तरह आगे प्रोसीड करते हो। कोई दोस्ती, यारी, कोई दुश्मनी, फैमिली रिलेशनशिप, एनीथिंग, it's no strings attached if I would that's mostly for one night stand and that's like pre-Ramzan show हमने किया था। Interesting. So I guess को थोड़ा सा further हम जरा सोचने की कोशिश करें कि what other types of ships are there to sail in? मुझे लगता है कि आजकल की यूथ जो है ना वो शायद सही तरीके से बोर नहीं हो रही, तो वो अपने नए तरीके इजाद कर रही है। उनमें से एक तरीका जो सिचुएशनशिप्स है। Okay. वो एक ऐसी एक कश्ती है जिसके अंदर वो सवारी पकड़ लेते हैं और फिर वो जो है ना तैरते रहते हैं समुद्र के अंदर। कोई लैंड, कोई ड्रॉप साइट, कोई डॉक, कुछ नहीं उनको दिखता। वो बस डिसाइड करते हैं आप हम इसी शिप के हो गए। सही है। So can you give me an example of
Do you feel like कि लोग बहुत judgmental होते हैं like situationships की तरीके से like अगर आपकी कोई छोटी niece या some small kid that you're really attached to, like I imagine you're really attached to me because you care about me. You're invested in my growth and in my emotional strength. So would you be like, judgy about Amna क्यों situationship में पड़ रही हो? Why? मुझे अभी यही समझ नहीं आई कि मामला situationship में है. That is my entire dilemma. समझ नहीं आ रही है. You need to further define it out properly for me. बहुत ज़्यादा ships में हूँ मैं क्या बताऊँ कितने ships हैं? There's a whole beach where I am. I'm an island now. Okay. So basically, मतलब मुझे बताएं, are you like emotionally? Do you think that people जो ज़रा थोड़े से mature होते हैं अपने सोच के अंदर और ज़रा developed होते हैं, emotionally, financially भी developed होते हैं, तो वो सोचते हैं कि situationships में जो लोग पढ़ते हैं वो तो I think मेरा ये ख्याल है कि not coming from a youth perspective at all, I don't qualify to be that young, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे culturally इसको कुछ अच्छा समझा नहीं जाता. I don't know, अब बहुत ज़्यादा I know कि बहुत ज़्यादा culturally पाकिस्तान बहुत ज़्यादा evolve कर चुका है और ये वाली जो terms है हम अपनी जब आतिश जवान था तब ये नहीं होता था भाई. So अब जो है ये चीजें आ गई हैं. So what is happening? I don't really understand. मुझे लगता है कि culturally we are still stuck there or it's still a big jump. चीजें आ तो नहीं गई. मतलब OG situationship को चेक कर ले, जैसे अमिताभ की मूवी सिलसिला. अच्छा, नहीं देखी? बिल्कुल भी I think कि अगर OG situationship को Rekha and Amitabh had like a situation, the situationship of like the century, right? बिल्कुल. So ये आ नहीं गई चीजें, हमने देखी हैं, सीखी हैं, इनको subconsciously register किया और सोचा है कि ये जो है इसको मजेदार कैसे बनाया जा सकता है. I think. Do you think कि ये जो situationships हैं, how are they born? How are these complicated relationships born? ये क्या वजह है जो ये मतलब life doesn't have to be black and white. I mean I understand grays भी होता है भाई, but ये it's too gray for me. When two 23-year-olds come together with no understanding of the world and lots of hormones, that's where it all starts. It starts with they have to specifically be in their stupid 20s, not early, not late, not mid, dumb 20s, and they have to decide to make them even dumber. But I don't think कि I think कि because ये जो youth है ये 20s से 30s में भी जाएगा और जो आपकी habits develop हो जाती हैं वो they stay on for a very long time. और ये situation जो पाकिस्तान में हमारी शुरू हुई है ये दुनिया भर में तो आती रही है ना, ये तो it's been there for a good. I think situationships are like you are pretending that feelings won't get in the way of your decisions, but they eventually do. They do, and that sabotages the entire ship. Sabotage, it makes it into a full drama, a full blown scale drama, properly. आपको लगता है कि इस तरह की चीजों का कोई अंजाम नहीं होता और repercussions नहीं होते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपने अगर किसी के साथ बुरा किया होता है तो वो karma की शक्ल में नहीं, बट वो आपके फ्यूचर के अंदर डेफिनेटली वापस आएगा. मैं गारंटी कर सकती हूँ, आप भी गारंटी कर सकते हैं. That she's been lying all this time. She's fully 23 years old. ये तो अच्छी बात है. She's been lying all this time. Skin. This is no derma cream, no spa has had effect on this skin. This is virgin skin always. Thank you for that, Amna. लेकिन I know you judge people in situationships. I know it. She's never going to say it, but I know she does. I cannot help it. I've grown up to be so judgmental. मैं क्या करूँ? But that happens, you know. I would really say कि ये हो नहीं सकता. I don't know. Everybody judges. मुझे लगता है हर एक का एक वो होता है, you know. There's something in your head. You are always constantly we are judging people. हम माने ना माने वो एक अलग बात है. Everybody judges people, and that's
I judge people, right? कह रही है कि she's not judgmental. It's actually if I told her that I completely like robbed the bank, she'd be like, I understand the economy doesn't allow us to survive this. She doesn't judge people. It's just, I think Pakistan is filled with a lot of sexual judgment. And people just don't have a place where they can actually talk about how their body and their feelings just sometimes don't make sense to them. So they just I think this has always been there. Not talking about your sexuality, not talking about your orientation, not talking about generally what when two people come together, what is it, what is happening. We don't talk about these. हम कहते हैं अच्छा चलो इसको अंदर ही रखते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसके बारे में बात करने की, keep it under the rug and so on and move on. लेकिन मेरे ख्याल से ये एक बहुत interesting और important बात है कि because you don't have the exposure, so when you get the exposure, so you end up in situations like situationships. I think university kind of like, okay, you're right. I'll give you that. Okay, fine. जब आप जो है एक चीज के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते तो फिर आप जो है दूसरे तरीकों से like उसका outlet ढूंढते हो. You try to explore and जो आपकी the curiosity है. But आप लोगों के ज़माने में इतना like ज़माना मतलब कि 2-3 साल पहले इतना ज़्यादा है. वो था भी नहीं ना, like Netflix पे like किस तरह के shows हैं. अस्तगफिरुल्लाह, मैं भी नहीं देख सकती कभी-कभी. I swear it's ऐसे कौन से shows जानना? It's too much. There's too much out there now. They're showing them too much. Have you seen that show, The Class? It's an Indian show. और उसके अंदर जो है बस हर कोई हर किसी के साथ लगा. Okay, that's a good definition of my generation. Thank you. और आप बस मतलब या तो आप अपनी आंखें बंद करके बैठे हो, मतलब उसका तो कोई तुक नहीं है honestly, because sound effects भी are doing the job. But the thing is कि आप like honestly exposure आप लोगों का इतना crazy level का हो चुका है that मैं सोचती थी कि अच्छा मतलब ये सारी चीजें peak कर चुकी हैं, but नहीं, you guys are still finding new and improved ways to like outstand yourself. Honestly, I don't know what you guys are trying to achieve, but there's definitely a roadblock somewhere. Like मतलब इससे आगे क्या है? अगर situationships में अगर एक बंदा पड़ भी जाता है and assuming कि एक लड़का जो है ना वो बहुत ही ज्यादा जो है ना, वैसे मैंने लड़कों को तो usually हारते देखा है situation. आपकी बात है. That's good. आपकी बात है. I think situationships are super empowering for women. For women. मैंने usually औरतों को हाँ. I think you're right. I would agree with you. और इसके अलावा I think कि recently हमारा लाहौर शहर की अगर बात करें, अगर लड़की हाँ नहीं कहती तो situationship start नहीं होती. That is true. इसके अलावा मतलब I don't think it's even happening in जो not just you said कि people in 20s and hormones and everything. I don't think that's going on. मैंने situationships जो अब recent देखे हैं, मैंने ये भी देखे हैं कि जिसमें हम sugar daddies वाला concept भी आप लेकर आए, तो ये बहुत ज़्यादा I think एक prevalent किस्म की एक चीज़ हो चुकी हुई है हमारी society के अंदर. So there are people younger than you doing that kind of stuff as well. So I think हमारी society has evolved in a lot of senses. I think that sugar daddies are like up to sugar mommies भी आ चुकी हैं honestly. You're right. Yes, like what do you think? Like it's better to be in a situationship with somebody who's like much older than you, or like मतलब एक equal terms पे situationship चले जिसके अंदर दोनों लोगों की more or less your understanding same हो दुनिया की. What do you think? Okay, now you're putting me in a spot. But मुझे ये लगता है, I want to know. मुझे ऐसे लगता है कि जब लोग when people are in a relationship,
So kahin na kahin relationship is like, I mean, it's a legal relationship, it's illegal, whatever relationship that you have. Illegal relationships. Oh, whatever. I mean, I'm saying कि आपका, you know, आप शादी है तो वो legal हो जाता है ना. सिर्फ रेप से पहले रेप के बाद. All relationships, they are you know, a trade of something, you know. आपका काम मैं करूँगी, आप मेरा काम करेंगे, and you know, sort of moral support के लिए हर relationship is there to support each other. That sounds very boring. No, seriously. I hope your relationships are not a trade-off between what. No, it has to be a trade-off in some senses. कि कहीं पर I will understand you somewhere, you are going to understand me. That is a trade-off, right? ये understanding क्या होती है? ये तो इस चिड़िया का तो नाम नहीं सुना पहले. That is ये कौन सी चिड़िया है? और वो भी पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान में होस्ट कर रहे थे ये शो. अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है यहाँ पे. बाहर से मंगवानी पड़ती है. बोर्ड टैक्स लगता है. But so far failing to understand the situationship. Seriously. Then अब तो हमारे दरमियान situationship बन चुकी है. हम बात की अब तो हम start हो गए. But honestly, like, there was more wholesome approach to relationships पहले. Like अगर 2000s में भी देखें, I think 90s में तो अलग ही बात थी obviously. Like to early 2000s में, I guess people were more like less about, you know, physically they were less frustrated. I think they were more like focused. Seriously, what is wrong with you, Amna? Giving me that look. Yes. Wow. What is wrong with you? Less frustrated. ऐसा नहीं है. Come on. They were. Like nobody was frustrated in 2004. How? Except for Al-Qaeda. Nobody was that frustrated. No. Nobody was frustrated. No. Nobody was frustrated in 2005. No, Al-Qaeda, you know, got the, you know, the billboard. लेकिन ये बाकी, I think everybody else, we don't talk about it, and that's the entire, I think, the whole problem. How frustrated people were in the 2000s? Yes, were they? I think so, yes, why not? This frustration has always been there. It just really depends कि अब हो सकता है because of the, you know, the given exposure, बढ़ गई हो फ्रस्ट्रेशन या एम्पलीफाई हो गई है या आपको फ्रस्ट्रेशन को निकालने का एक डिफरेंट तरीके पता चल गए हो. बट पहले फ्रस्ट्रेशन होती थी कहते थे अपने तक रखो भाई, चुप करो, ठीक है. So just keep it to yourself. That was totally working, by the way. Clearly now we're in this spot. I think everybody has an opinion, everybody has rights, everybody has, you know, कि मुझे क्यों कुछ कह दिया, तो you know, so of course it has to have, it's going to have a spillover effect. मतलब मैं तो इस impression में थी कि frustrations नहीं थी, but अगर आप ये सोच रहे हैं कि I don't know, मतलब दुनिया ज़्यादा बेहतर थी थोड़ी बेहतर थी. नहीं बेहतर थी simpler थी बेहतर थी in the sense कि हाँ हम इस बारे में बात नहीं करेंगे. They were clear no-go zones. तो अब वो थोड़ी सी boundaries जो हैं वो blur होती जा रही हैं, and I think that is how it's going on. Like if you had to succeed as a woman, I think all you needed to be was like not even pretty, you just had to be like presentable. And if you had to succeed as a man, all you had to be was rich. And now all you have to do is like, what? Now you're just pure talking German to me. I have no idea what you're saying. I'm talking gibberish. But honestly, I feel like situationships are just a representation कि वक्त बहुत complicated हो गया है. That is true. That is an excellent thought. इसके ऊपर I'm just going to wrap up this discussion. I think हम तो never ending हमारा एक spree चलता रहेगा. But I think the times are difficult, times are different, and they have more exposure, they have more outlets to talk about different issues. और इसकी वजह से I think these terms are coming about, और इस किस्म की जो हमें बहुत ज़्यादा the dialogue is starting to, you know, sort of we are starting to hear so much about it. So on that note, I'm just going to leave you there. Stay tuned. We are definitely going to show up again with another more interesting conversation on any other topic. And tell us all your opinions about situationships. Yes, tell us below. Ji, please बताएं how Amna is right or not right. No, tell me your situationship stories fully. Please tell her, okay? Thank you so much everyone for joining in. Inshallah, till next time. Bye-bye.